to start UV rule. That is, अगर मान लो दो functions का अगर product हो तो कैसे हम लोग differentiate करेंगे? Consider one function as u, the other function as v, and let us apply the formula. Formula is u, that is x to the power 5, into ddx of v, into ddx of v, that is e to the power x, plus v, that is e to the power x, into ddx of u, that is x to the power 5. All right. So ये रहा x to the power 5. What is, so ये तो बाहर है, ये जैसे है वैसे रहेगा. What is ddx of e to the power x? Check formula number 3. ddx of e to the power x is e to the power x plus e to the power x. What is ddx of x to the power 5? It is 5x to the power 5 minus 1, which is 4. Differentiation is over. Now you can simplify this. How? What is common in both these terms? We have x to the power 4 and e to the power x common. So what is left? It is x plus 5. All right, everyone. So you can leave your answer clear. I repeat once again. Let me explain you. Just summarize the whole thing. अगर मान लो suppose 3 into x square है suppose, तो क्या हम लोग इस केस में हम लोग UV rule अप्लाई कर सकते हैं? Definitely if you apply, that is not wrong. Just note down. अगर मान लो मैं इसको u और इसको v लेके इसको UV rule इसमें अप्लाई किया मैंने suppose, तो फॉर्मूला u ddx of v plus v into ddx of u. ठीक है. Now ddx of x square is how much? 2x. What is ddx of constant? 0. What is 0 into x square? 0. So what is the answer? It is 3 into 2x. So what you are finding, आखिर में अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल में भी अगर हम यूवी रूल अप्लाई करें तो आखिर में बच क्या रहा है बताओ तुम. देखो तो यही तो बच रहा है ना. 3 कांस्टेंट है बाहर रखो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. समझ में आया? तो इसीलिए जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, keep that constant outside and differentiate the variable part instead of applying u value. Clear everyone? So now see, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 कांस्टेंट है बाहर रख दिए और यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट है, उसमें एक को u ले लेना, दूसरा को v, और फॉर्मूला अप्लाई करना. अप्लाई करके आंसर आएगा. नाउ इसके बाद ये कॉपी करके everyone solve the next question which I am giving you. It is x to the power 5 plus 1 into sin x. Hurry up, solve this. If you have doubt in number 1, you can ask. Have you differentiated this? Yes. So we have got product of two functions. Let me explain you one more sum. So write down differentiating y with respect to x. So we have ddx of y. Y is an expression where you have got product of two functions. Both is a variable. So consider one function as u. ddx of y is u dy by dx. यहाँ पे एक को u लेना पड़ेगा और दूसरा को v लेना पड़ेगा.
Let us apply UV rule. And the formula is U, that is x to the power 5 plus 1, keep it in bracket, into ddx of V, that is sin x, plus V, that is sin x, into ddx of x to the power 5 plus 1. सी दिस इज आउटसाइड, ये तो बाहर है, ये बाहर है, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हमको डिफरेंशिएट sin x को करना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, चेक करते हैं। प्लस प्लस sin x जैसे है वैसे रह देना। नाउ व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5 plus 1, कैन एनीवन टेल मी? यस, व्हाट इज ddx ऑफ x टू द पावर 5 plus 1? I'm not getting a reply from anyone. Click. Yes, very simple. Like when you are differentiating an expression, and here we have got two terms, we will separate and differentiate this. Okay, we will separate the terms and we will differentiate. That is ddx of first term plus ddx of second term. What is ddx of first term? That is x to the power 5. It is 5x to the power 4. What is ddx of second term? That is constant. It is 0. So the answer is x to the power 5 plus 1 into cos x plus 5x to the power 4 into sin x. This is the answer. Next, question number 3. Everyone, do this third question which I am giving. X square plus 3x plus 1 into x square plus 5. Don't multiply and then differentiate. Take one as u and the other as v and differentiate. Do fast and find out dy by dx. See, we have got product of two functions where both is a variable. Do you agree that both is a variable? Yes. Okay, so consider one function as u and the other function as v. And let us apply the formula. Formula is u, that is x to the power 5 plus 1 into ddx of v, that is sin x, plus v, that is sin x, into ddx of u, that is x to the power 5 plus 1. ये बाहर जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएट किसको करना है, sin x को, ddx of sin x is cos x, check the formula, plus sin x. How to differentiate x to the power 5 plus 1? In order to differentiate x to the power 5 plus 1, we can split, because you know in the first class I had explained you, to differentiate an expression having more than one term, let us separate and differentiate. Okay, सारे terms को अलग अलग differentiate करो. X to the power 5 का differentiation is 5x to the power 4 and ddx of 1 is 0. Add कर लो इतना sin x और is this okay? Yes, please tell me reply. Is this okay? Okay. Now try question number 3.
Now, have you done the sum number 3, everyone? You don't understand. समझ हो गया अच्छा ठीक. Just I'll solve it. Okay, just check the answer. Okay, तुम लोग का आंसर क्या एक बार चेक कर लो. मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँ. So we have got x square plus 3x plus 1. इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा. ठीक है, चेक कर लो. प्लस x square plus 5. इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x plus 3. And then after multiplication, whatever answer you get, I think ये है तो आंसर चेक कर लो तुम. After multiplying, and then you can simplify. Check once. Okay. Now next question. Suppose you have got product of 3 things, okay? Now see, this formula is very easy to learn. See how what we are doing here. We are keeping u outside, differentiating v. We are keeping v outside and differentiating u. Same thing यहाँ पे भी हम लोग करेंगे. क्या करेंगे देखने का. ddx of u क्या बचा बताओ तो vw की vw outside प्लस ddx of v क्या बचा v के अलावा uw keep uw outside. Differentiation of w, what is left? uv, so keep uv outside. This is the way how you can differentiate. Is this clear everyone? Check कर लो एक बार. समझ में? पहले u को differentiate करो, vw को बाहर को कोई भी order follow करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता because you know that a plus b plus c same as b plus c plus a is same as c plus a plus b. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You write this first, then this or this, या इसको पहले लिखो, इसको बाद में, इसको बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Clear? I hope it is clear everyone. The application of formula. Now see. Now use the formula. I mean, you can see here. Let's see. Suppose x square plus 1, 2x cube plus 1, 3x square plus 4. This is the question, and you are asked to find out dy by dx. मान लो क्वेश्चन में बोला है find dy by dx. तो ध्यान देना. Differentiating y with respect to x. So we have got ddx of y. Now y is a function having product of 3 factors. So how to differentiate this, everyone note down carefully. ddx of y is written as dy by dx. Consider one function as u, other as v, second one as v, and the third one as w. Let us apply the formula. Formula is, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्डर में लिखो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. So formula is vw into ddx of u, that is x square plus 1 plus uw that is x square plus 1 into 3x square plus 4 into ddx of v. Okay, that is 2x cube plus 1 plus ddx of w and keep uv outside. X square plus 1, 2x cube plus 1 into ddx of 3x square plus 4. All right, everyone? Now, how to differentiate x square plus 1? Please answer me. And okay, you are telling me the answer directly. How to what is differentiation of x square plus 1? Yes. 2x. Very good. Because when you are differentiating an expression having more than one term, हम लोग अलग अलग करके डिफरेंशिएट करते हैं. तो ddx of x square क्या होगा? 2x. ddx of constant क्या होगा? 0. Keep it in bracket.
What is ddx of 2x cube plus 1? You find that 2 is a constant, 6x square, very good. It is 6x square because 1 का derivative 0 होगा, I'm writing here, okay? x square plus 1 into 2x cube plus 1 and ddx of 3x square is 6x plus 0. And now you can multiply and differentiate, simplify the expression. So you have 2x, or you can leave your answer till here also. No need to multiply. You can leave your answer till here. The maximum thing you can do is you can take x common from all the three terms. Comfortable. After completing this sum, you are trying the next sum, that is 5 e to the power x cube into sine x. Try this sum once. After this, u by v, then almost the stop chapter will be. This exercise 19c will be over. I'll just write down the answer and check, okay? So just wrote down here. I'll also explain कि अगर मान लो किसी को suppose doubt है तो clear भी हो जाएगा और you can match जिसका answer जिसका आ गया you can match your answer. So first of all I'll keep 5 outside, which is a constant, and we have got product of 3 factors. Consider one as u, second one as v, and third one is w. Let us differentiate. Alright, now we have got x cube into sine x. ddx of e to the power x is e to the power x. E to the power x into sine x. ddx of x cube is 3x square. ddx of sine x is cos x. I hope it is clear. Check once. What common you have? E to the power x and x square common. You can take that common.
that is not a problem. Okay, you can take e to the power x common and x square common. So what is left? X sine x plus 3 sine x plus x e to the power, x cos x. Clear, everyone? Yes? Okay. You can leave your answer till here also, no problem. की बात है. अब हम लोग देखेंगे u by v. If anyone's copying, let me know. Else I'll erase the board. Okay. Now, suppose we have got division of two variable. This is called quotient rule or u by v rule, you can say. So, let us take one question. Suppose you have got x square plus 1 divided by x square minus 1. Let's take this sum. मान लो बोला गया है find u by v, I mean find dy by dx. u by v नहीं बोलेगा, find dy by dx. So differentiating y with respect to x. So we have ddx of y. Y is an expression which is in u by v form, मतलब fx by gx form. My voice is cracking. Maybe network problem थोड़ा होगा. Please, other students reply once if my voice is cracking. It's clear. It's okay. If it is clear means if it is clear then जिसका clear नहीं है, maybe तुम्हारे end में network problem होगा. थोड़ा 1-2 मिनट होगा problem. देख लेना एक बार ठीक हो जाएगा. So I am repeating once again. So I have to differentiate this. So what I am doing? I am considering the numerator part as u. Numerator function as u and denominator को मैं v ले लेता हूँ, ठीक है? And I'm applying u by v here, okay? ddx of y is dy by dx. Let us apply u by v here. तो फॉर्मूला क्या है? v that is x square minus 1 into ddx of u. चेक कर लो एक बार, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, चेक करना. न्यूमरेटर में जो पार्ट है उसको u ले लिया, डिनोमिनेटर में v. बट मेक श्योर दैट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए. लेकिन जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा सिचुएशन है, सपोज यू हैव गॉट x स्क्वायर बाय 2, डोंट अप्लाई u बाय v रूल एंड वेस्ट टाइम. क्या वो रॉन्ग हो जाएगा? नहीं. जैसे मैंने बताया था कि 2x स्क्वायर में अगर हम लोग u v रूल अप्लाई करें तो रॉन्ग नहीं होगा. बट इतना क्यों करेंगे? हम लोग को जब पता है रॉन्ग नहीं होगा और आखिर में यही चीज आएगा लास्ट में, अगर हम लोग u बाय v रूल u इनटू v रूल अप्लाई करें तो क्यों हम लोग u v रूल अप्लाई करेंगे? एग्जैक्टली सेम वे हियर, डोंट अप्लाई u बाय v. You better apply this property that if you have any constant into fx, keep constant outside. तो हाफ को बाहर रख देंगे हम लोग और हम लोग x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज न्यूमरेटर भी फंक्शन ऑफ x है, डिनोमिनेटर भी फंक्शन ऑफ x है. मतलब न्यूमरेटर इज आल्सो वेरिएबल, डिनोमिनेटर इज आल्सो वेरिएबल. So let us apply u by v. Formula is v ddx of u that is x square plus 1 minus u that is x square plus 1 into ddx of v that is x square minus 1 divided by v square that is x square minus 1 का whole square. ddx of x square plus 1 you can separate and differentiate. You can split and differentiate. You can differentiate x square, you can differentiate 1 separately. अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, 1 इज अ कांस्टेंट, इट्स डेरिवेटिव इज 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, ये जैसा है वैसे रहेगा. x स्क्वायर का 2x, 1 का 0. टू एक्स प्लस 0 is 2x, multiply 2x with both the terms. So 2x into x square is 2x cube
Plus minus minus 2x into 1 is 2x. Minus plus minus 2x minus 0 is 2x. So 2x into x square is 2x cube. Minus plus minus 2x into 1 is 2x. 2x cube gets cancelled and we have got minus 4x by, हाँ एक ही बात सेम ही चीज है. Okay, so this is the answer. Everyone copy down and try the next sum. Find dy by dx. Hurry. This next question. Now, सबका आगे आंसर and what is the answer? Just see. Can you tell me what is the answer? Anyone? It's 2e to the power x by e to the power x plus 1 का whole square. Correct? Everyone? Okay. Now book से 19C से मैं कुछ sums करा दे रहा हूँ selective. जैसे कि number 14. ठीक है? 14, 16, then 17. Okay? ये सब sums मैं करा दूंगा तो हो जाएगा बाकी सारा sums. Okay? ध्यान देना. So everyone, try question number 14. हम बताए थे क्या करना है इसमें, ठीक है? ध्यान देना. Question number 14 में कुछ दिया नहीं है y इक्वल टू या fx, तो तुम y इक्वल टू ले लेना. इसको ले लेना y इक्वल टू x प्लस 2 बाई x स्क्वायर माइनस 3. एवरीवन लिसनिंग. क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंशिएट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव मींस डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट आएगा उसको डेरिवेटिव बोलते हैं एट x इक्वल टू 0. मतलब पहले डिफरेंशिएट करो एंड फाइंड आउट dy by dx. स्टेप 2, डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें x के जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. सो आई वांट एवरीवन टू डू दिस सम नंबर 14. First differentiate, find out dy by dx, then put x equal to 0. Complete first, then I'll show you number 16. And बस एक चीज याद रखना एग्जाम में 15, 16, 17 और प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैंने शायद 2 सम बोला था. दैट वाज नंबर 18 and 19. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. Do fast 14 and I'll explain the next one then.
Also, I mean, after finding dy by dx, make sure that you reduce. Okay, okay. पहले मत पुट करना वैल्यू, पहले dy by dx निकाल के रिड्यूस कर देना, सिंप्लीफाई कर देना. Everyone has completed number 14. Everyone, I was waiting for you all. सबका हो गया? वेट नहीं करना पड़ेगा किसी का? No, I'm okay. Next number 16. See everyone, students listen here. 17 and 18 अभी नहीं हो पाएगा. हाँ, जैसे मैंने वहाँ पे चार सम मतलब बोला था ना बाद में, तो वो अभी नहीं, ठीक है? I saw the, I mean पहले मैंने realize नहीं किया, अभी बिना चेन रूल का नहीं हो पाएगा ये. 17, 18 और previous exercise का. मैं अभी 15, 16 बताया था, ठीक है? तो पहले मैं 16 बताता हूँ because it will take time. Okay? So you are given x square root of 1 plus y plus y square root of 1 plus x. See, in every question till now, you had seen that the questions were explicitly, I mean, y was explicitly written in terms of x. What is the meaning of explicit? Can you explain me, anyone? Explicit means what? I mean, why? Very good. Very good. Absolutely correct. Means explicit means y जो है, it is equal to function of x. मतलब y is clearly expressed in terms of x. But here we are not finding in that form. अभी तक जितना भी उन्होंने सम किया सारा किस फॉर्म में था? एक्सप्लिसिट फॉर्म में था. अभी ये नहीं एक्सप्लिसिट फॉर्म में, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे. कैसे? नो डाउट. सबसे पहले इस टर्म को हम राइट में लेके जाके स्क्वायर करेंगे. आई विल नॉट स्क्वायर एट दिस मोमेंट बिकॉज इफ यू स्क्वायर अगेन यू विल फाइंड दैट root will come, okay, because a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. when we write 2ab you will find that ये दो चीज का प्रोडक्ट आएगा, वापस से रूट आ जाएगा. तो मैं क्या किया, मैंने इस टर्म को मैंने राइट में ले लिया. नाउ आई विल बी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई. इसका स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 plus x. Let us multiply with both the terms. Okay, let us shift all the terms on the left hand side and make pair with x square and y square. x y square, because ये इसके साथ पेयर करो. इससे क्या होगा देखना एक बार. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और इन दोनों में से हम लोग एक्स वाई कॉमन ले लेंगे. x माइनस वाई बच जाएगा.
So it is easy to factorize now. What common we have? X minus y. What is left? X plus y plus xy. So either x minus y equals to 0 or x plus y plus xy equal to 0. Alright everyone? Here we can write y equal to x. So we have expressed y in terms of x. In order to express y in terms of x, let us keep y वाला term on the left. I mean जो y वाला term है उसको left में, बाकी none y जो y वाला term नहीं उसको right में, जैसे ये वाला. ये दो term y वाला है तो मैंने left में रख के y common ले लिया. So what is y? It is minus x by 1 plus x. Now we are finding that we are getting two, I mean y equals to x and y equals to minus x by 1 plus x. So it is very much clear that if I differentiate this, you'll get 1, which is not there in the proof part, but I cannot give reason this way that as dy by dx of this is 1, which is not in the proof part, hence it is not possible. Is this the reason, proper reason? Absolutely not. What we are going to give proper reason is, we'll put y equals to x at the place of y, we'll put x once. If I put at the place of yx, it's x square root of 1 plus x square root of 1 plus x. क्या ये cancel होके 0 आएगा? कभी नहीं आएगा 0. So that's why this is not satisfying. y की जगह पे अगर हम x लगा दें या फिर वो भी छोड़ो, y का वैल्यू x का वैल्यू बराबर है तो मान लो हम लोग कोई इक्वल कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो y और x दोनों इक्वल है. Let us consider that value is 2. At the place of y and at the place of x put 2. If after solving, if you get 0, it means that it is possible. As we are not getting 0, it means that it is not possible. Yes. Okay, मैं बता रहा हूँ फिर से. So what I was saying is that मैं ये बता रहा था कि हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो इसका dy by dx आ जाएगा 1. तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना क्योंकि इसका dy by dx 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 प्रूफ पार्ट में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा. क्या हम ऐसा रीजन लिख सकते हैं? दिस इज नॉट द वैलिड रीजन. आई मीन दिस इज नॉट द प्रॉपर रीजन व्हिच वी कैन आई मीन राइट एंड जस्टिफाई दैट इट इज नॉट पॉसिबल. दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो हम क्या मैंने बताया कि तुम y और x पता है इक्वल है तो थिंक ऑफ एनी इक्वल वैल्यूज लाइक इट कैन बी 1, it can be 2, it can be 3, 4, anything. Let us take y and x both equal to 1. If at the place of x and y, if you put 1, and if after simplification, if you get 0, it means that this is possible, this is also possible. But as you are putting y and x equal to 1, क्या solve करके 0 आ रहा है? Tell me. I mean any value if you take negative, positive, anything. क्या आएगा आंसर? जल्दी बताइए. नहीं आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? Is not possible. Why? Because it is not satisfying. Solve this, I mean differentiate this, you'll get the answer. How to differentiate? Differentiating y with respect to x, right on. Okay, minus 1 is a constant, keep it outside. And we have x by x plus 1. Let us apply u by v rule. Consider numerator 1 as numerator as u and denominator as v. So formula is v ddx of u ddx of v by v square. ddx of x is 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0. Open the bracket of numerator part, you will find that everything gets cancelled. And the answer is minus 1 by x plus 1 का whole square. Alright, कॉपी कर लो.
copied everyone? Yes. You're not getting my voice. I mean, yes. Okay. Now students listen here. Do number 15 right now. 15 में तुम लोग सिर्फ dy by dx निकालो, बाकी पार्ट में बताता हूँ. करो तो एक बार. Find dy by dx. 15 number question. तो सिर्फ dy by dx निकालो. Calculated dy by dx. Fine. Now, so after calculating dy by dx, finding dy by dx, now what you'll do, take right hand side, okay? और right hand side में y की जगह पे वैल्यू पुट कर दो तुम लोग. ओके, पहले dy by dx निकाल लिया तुम लोग. So first find dy by dx, which is yes, this is the result. है ना, चेक कर लो एक बार. ठीक है ना, ये तो रिजल्ट जस्ट चेक कर लो एक बार. प्रूफ पार्ट का राइट हैंड साइड ले लेना, which is y into 1 minus y. Put y, which is x by x plus a. Simplify. X gets cancelled. So we have we have x into a divided by x plus a whole square. Who can tell me how to prove that this is equals to x dy by dx? Can anyone explain me how to prove that this is equal to x dy by dx? Anyone? Yes. I mean, just note down. ये देखो, अगर तुम ध्यान से ये चीज, तो ये चीज क्या है बताओ तो, dy by dx है कि नहीं, चेक करो. This is what we have on the left hand side. All right, what I said. ये सॉल्व करके कितना आ गया, और प्रूफ करना है हम लोग को x into dy by dx. What is this? This is dy by dx. That's all.